Am I audible, very clear, crystal, or do you want me to increase the microphone volume? ठीक है ना? Yes, sir. Okay. We started with custom formatting. So let's proceed with the custom formatting. Let's see more things in that. जहाँ तक मेरे को याद है अपने क्या क्या किया था. Custom formatting means हम लोग ने किया था कि how do I customized the things by using Control+1, going to custom and writing something over here. ठीक है ना? Okay. Now let's come to something called dates. Let's say I have some dates over here. जैसे मेरे पास में ऐसा date लिखा हुआ है and suppose these are the dates. ये dates कैसे आ गया? ये automatic. How I made this? Everything I will teach you all when we come to functions. Now this is a general format of showing the dates by Excel. I don't know ये क्या है. Okay, I just come to know when I just see this 13. I come to know that 13 cannot be a month. It means starting में date है and then it's month. But many times what happens? Month comes first and then comes date, right? तो यहाँ पे तो मुझे पता चल रहा है सिर्फ ये 13 को देख के 22 ऐसा देख के समझ में आता है. Now let's say you just want to show this dates in different ways. तुमको ये कैसे दिखाना है? How you want to show this dates? I want to show this dates only as say मेरा date आना चाहिए. Only one should be representing या तो 01 आना चाहिए. Okay, 01 मतलब ऐसा. और sorry 01 आ जा. ये मेरा month हो गया है ना. तो ये पहला month है, not date है. Sorry 13 is my date. मैंने month बोला ना. तो ये स्टार्टिंग में m ये month है. This is it means this is MMDDYY format because Excel हमेशा पहले month लाता है. So I wanted पहले date, then I wanted month, or you wanted this January. Sorry ये जो first है और ये January जो है वो January ऐसा दिखना चाहिए. So instead of all the dates, I just want to see Jan, or I just want to see this Jan 23. मुझे ऐसा दिखाओ 23rd Jan or Jan 23. There are so many ways you want to show this, right? Okay. अब इसको देखो कैसे लिखते हैं. The format is M, D and Y. ठीक है? That's called M, D and Y. M stands for month, D stands for day, and Y for year. How many different ways you can write this? अगर custom formatting में जाके मैंने सिर्फ M लिख दिया ना, खाली M, Month. इसका मतलब होता है कि ये डेट को मुझे सिर्फ वो पता है क्या कैसे दिखाएगा? ऐसे दिखाएगा. If I just write M, it will show me like this. But if I write MM, it will show me like this. 01 दिखाएगा. I have to put a label prefix because नहीं तो 0 निकाल देता था. समझ में आ रहा है? If I type like this 113 times M, then instead of numbers, it will show me this one. If I type 4 times, then it will show me something like this. आ रहा है समझ में? Same goes with D. If I write only D, then it will show me 13. If I write DD, it will show me 13. But if I type DDD, it will show me FRI. And if I type DDDD, it will show me Friday. अरे समझ में? दर्शन? No, sir. No, very nice. आ जाएगा रुको. कितना honest answer दिया तुमने. No. चलेगा. See, Y represents years, D represents date. तो मैं I'm going to write Yes, this sir. over there. So ऐसा Sir, समझ. I didn't get it This where, is my when custom you type. format. Sorry, just see this. I'm writing it over here. ऐसा समझ लो कि this area is actually I am writing in that format. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. I'm writing it over here. ऐसा assume that I'm writing it over here. ठीक है? So suppose if I write only M after selecting this all, and if I just write M, you will see that M का मतलब होता है 1. So यहाँ पे पता है क्या आएगा? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा आएगा. Only month will be visible. But if I type MM, so it will be 2 digits month, or if MMM, then it will show me this. Let's check. सबको select किया? Okay, Darshan? Press Control+1. Go to custom. Remove everything. And now you can see the sample up. जैसे मैं M लिखता हूँ. See what will happen?
it is showing me 1. You know why 1? Because 1 is the month. But if instead of M, if I type D, then you will see it is showing me 13th now, because तो पहला वाला पकड़ के आपको सैंपल दिखा रहा है कि देखो ऐसा होने वाला है अगर तो D लिखेगा तो इट मींस ये बोलता है कि आई विल कन्वर्ट ऑल द डेट्स, तो ये 13 रहेगा, नेक्स्ट में मैं 6 लिख दूंगा, and instead of D if I type Y, then you will see it's showing me 23. बराबर है? Okay, instead of M I will write MM, so now instead of 1 it is showing me 01 because 2 digits month, है ना? I write DD, it means 2 digits date. Okay, I write MMM, you can see this. अभी खाली ओके कर दूंगा, see what will happen. So the dates, you don't want to see the dates. I just wanted to see only the month from the date specified. इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे डेट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो पूरा डेट लिखा है, बट यू हैव कस्टमाइज्ड योरसेल्फ कि मुझे सिर्फ ये दिखाओ. आई जस्ट वांट टू सी ओनली द मंथ पार्ट बिकॉज यू हैव मेंशन्ड एमएमएम. है ना समझ में? ओके, नाउ इफ आई राइट हियर एमएमएम one more time, I press control 1 and this time I go to custom and I write here MMMM. Now you can see what happens. So instead of the short form, he is using the complete month name. Is that clear, Manasa? Yes, sir. Very nice. Can I, Darshan? Okay. Okay. Now see, suppose if I say I just customize my data. I will talk let's say I just want to go for that is month. Then do one thing. No, मुझे ऐसा लिखना था कि it's Friday, so I will type here DDDD. So DDDD का मतलब Friday. So I say Friday what? Friday it's 13th. ठीक है? See the way I'm typing, 13 of August 2023. ठीक है, समझ में आ रहा है? So this DDDD means Friday. पूरा फ्राइडे आएगा, पूरा फ्राइडे लिख के आएगा. फिर डैश तो मेरा डैश वैसे ही दिखाएगा वो. Then DD means date, Friday 13th of MMM मतलब JAN and YYYY मतलब 2023. Let's copy this. Okay, and select all of them and press Control 1. Go to custom and try to paste this. Okay, it's not giving me the paste. चलेगा क्योंकि मैंने I think इधर से निकल गया हूँ इसके लिए. I will type it here. I say it's Friday. दिख रहा है आपको? Friday what? It's 13th of January 2023. And I say okay, and you see that all your dates is showing me in this way. Instead of off, I can just write the name like this. और भी बताता चलो आगे. Okay, now you just see that so many combinations I can give using this. आप पहले YY कर दो. You say I just want to write only the date and the year. You just write DD dash YY. ठीक है? Hi Nuzat, Rewani. Hi, I just saw you. Okay. वो कहाँ गया अपना? क्या नाम उसका? उजित ना क्या नाम है? आया कि नहीं आज वो? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा. अरे आ गया पुजीत, क्या बात है, नाम भी आ गया देखो. चलो ठीक है. I'm just mute कर रहा हूँ मैं नुज़ात को. Thank you for being on video. Now DDYY हो गया. अब ये DDYY को अगर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ and I just select this all and I press Control 1 and Control V. अरे DD dash YY.
ऐसा दिखेगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्रकाश? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आती है बात इंपॉर्टेंट, देखो अभी मैं आपको कंडीशनल दिखाता हूँ। हाँ, से okay, let's say I have some names over here and I have English, Hindi, Marathi, science, maths and social studies. I will type some names here. I just type here Darshan, and I have N Z H A T H, and I have P U J. कुछ इसका स्पेलिंग क्या है? P U J H I T, P double O क्या है? P double O J I T H हाँ हाँ, P O O, right? P O O J I T. Okay. Then we have Sahana. Then we have Noktal. थोड़ा सा नाम देता हूँ मैं सबका ताकि थोड़ा आपको मजा आएगा, क्योंकि ये जो मार्क्स अभी आने वाले हैं ना, these are all marks given by Excel. So let's see who is getting what. We have Sandhya. Okay, इतना देता हूँ, right? Now don't blame me for the marks, okay, Nuzar? Please, अब जो मार्क्स आने वाले हैं वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो खुदा से आपको मार्क्स मिलने वाले। So I just type here equals to random between, this a function, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स दे देगा। तो ऐसे गिव द मार्क्स फ्रॉम 2 से लेकर 99 के बीच में या फिर 95 तक आप मार्क्स दे दो। सो इसको अब टेंशन मत लो, मैंने ये मार्क्स नहीं दे रहा हूं। अब मैं एंटर मारूंगा और देखते हैं किसके नसीब में क्या मार्क्स आता है। सो मार्क्स आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। नुज़र बहुत ज्यादा परेशान लग रही है क्योंकि उसके मार्क्स जो हैं, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी नुज़र, 28 32। आप तो ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट में फेल हो। पूजित बहुत खुश है तुम फेल हो गई तो, अच्छा दोस्त है तुम्हारे। ओके, अब मेरा सवाल पता है क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। इफ आई आस्क यू कि चेंज द फॉन्ट कलर, तो आप क्या करते हो? यू जस्ट सिलेक्ट एंड चेंज द फॉन्ट कलर, करेक्ट? बट नाउ ऐसा नहीं है। चेंज द फॉन्ट कलर टू रेड ओनली दोज हु हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट। मतलब समझ गया आप? मतलब तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि जो जो बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स में, उन सबको हमको रेड करना है। आंसर इज अ नाइस क्वेश्चन, राइट? यस सर। तो अब आपको पता है, दर्शन जस्ट एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, वैसे भी दर्शन बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करता है। इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ यू वांट टू चेंज द कलर, तो आप हमेशा बॉक्स ब्रैकेट के अंदर यू राइट द कलर, या तो आप रेड लिखो या तो तुम उसको बोलो ब्लू, ओके, और यू कैन राइट ग्रीन एंड समथिंग। आ रहा है समझ में? बट आपको लगेगा अभी सब नुजरत बोलेगी सर माय फेवरेट कलर इज पर्पल, कैन आई गो विद पर्पल और मेहंदी? आई एम सो सॉरी, यू कैन नॉट टाइप ऑल दिस कलर्स। सॉरी टू से दैट, जोक कर रहा हूं मैं, आप लोग को बहुत हंसते नहीं हो आप लोग, मैं ही हंस रहा हूं आपके बदले में। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैक, ये सब कलर्स ले सकते हो आप। इज दैट ओके जयराज? आई कैन नॉट गो फॉर एनी डिफरेंट कलर्स, लेकिन उसके लिए भी इलाज बता। तो अब क्या होगा देखो, हाँ, अब अगर मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया सब बंदों को, I press Control 1, and if I come to custom and I just say red, you know what this means? This means everything is red. Everything, whatever is, all the numbers should be red in color. I say okay, and you will see that ये color तो change हो गए, correct? But this we could have done using the font from here, but now this will not work. इतना याद रखना। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करके मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और आप बोलोगे कि सर ब्लू कर दो, आप देखोगे नथिंग चेंजेस। इट मींस आपने अंदर से कलर कोड से चेंज किया दर्शन। अब किसी की मजाल नहीं है कि वो बंदा यहाँ से कलर चेंज कर सकता है। नो वन कैन डू दैट। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर नाउ?
I just wrote red inside. Now this will not work anymore. Is that clear? Okay. Yes, The yes. question was, we don't want to make everybody red, right? हमको तो किसको रेड करना है? नजर फेल जो सब्जेक्ट्स में है उनको रेड करना है. Okay, so how you know that who has failed? आप कैसे बताएंगे? Like the minimum marks has been allotted for the passing. Yeah. So out of 100, 35 is passing, right? Yeah. So we assume that anyone who is scoring less than 35 will make it fail, right? तो चलिए, उसका मतलब होता है कि 35 के नीचे वालों को लाल करते हैं. ठीक है ना दर्शन? अब खाली रेड लिखोगे, ध्यान से देखो, खाली रेड लिखोगे, it means you are not giving any conditions and you are asking Excel to make everyone red. But now you have some conditions. So after putting the color code, you open one more bracket and the conditions should always be in brackets. याद रखना मेरी बात. The color code and the conditions should always be in box bracket. उसको आप खुला नहीं लिख सकते हो. Okay. तो मैंने खाली रेड बोल दिया तो मेरे को उसने सब रेड कर दिया. But if I put after red the condition, what is my condition? दर्शन, मेरा कंडीशन क्या है? रेड करना है किसको? अच्छा, इसका माइक्रोफोन नहीं चल रहा है बेचारे का अभी तक. दर्शन, तेरा 1 साल से माइक्रोफोन बंद है, मालूम है तेरे को? Sir, now can you hear me, sir? Yeah, now it's working. Now I can hear you. Sir, people who got less than 35 should be like colored. So less than 35 is my condition. Yes, sir. So I said make red less than 35 and I just close my bracket. बस बाकी टेंशन मत लो, इतना सा देने का और खुश रहने का. अभी मैं इसको सिलेक्ट करके इधर से सबको सिलेक्ट करता हूँ और I press Ctrl 1 and this time I go to custom and I just don't say that make red everyone, but I will say red make it only who are less than 35 please. अब देखते क्या करता है. Just see what happens, huh? And don't get shocked. जैसे मैं ओके करता हूँ. 1, 2 and 3. देखा, उसने बराबर किया, जो तुमने बोला उसने किया. कोई गड़बड़ है क्या? See, Rest all of the numbers are not visible. that is okay, fine, but whatever आपने जो बोला वो किया ना उसने. He had obeyed you. आपके सारे ऑर्डर उसने लिए. आपने बोला कि प्लीज anyone who is less than 35 make it red and he did that. But now if you say he, sir, why these are all hash symbols? So आप तो because we have not mentioned anything for others, so Excel is in trouble. वो बोलता है कि why, what should I show who is not less than 35? उसके लिए क्या करने का है? समझ में आ रहा है? Semicolon. So now we have to put a break statement. मतलब आपका एक सेंटेंस पूरा हुआ. The sentence is make red who are less than 35. I will put a semicolon and rest को क्या करने का है? Rest को मेरे को black करने का है. So one sentence is over. Again मेरा next sentence चालू हो रहा है. Black करने का है. And I'm not putting any condition. I could have done like this also. मैं ऐसा भी कर सकता था कि black करो which are more than 35 and I press enter. ये भी कर सकता. ये समझ में आया? Let's see. I will copy all. I will paste this. देखो, red less than 35 and black more than 35 and just see what happens when I say okay. You will see this video. ठीक है? पक्का समझ में आया नुजरत? Yes, sir. Okay. अगर सच में समझ में आया है सबको. सर एक क्वेश्चन था. Yeah, who is questioning me? Yeah. सर गणेश. Yeah, Ganesh. सर एक्चुअली जो कलर कोड के लिए है वो ब्रैकेट आपने बताया, ठीक है. फिर Correct. उसके बाद जो अगर हम 35 से नीचे वालों को वो कर रहे हैं उसको भी ब्रैकेट में लेना जरूरी है क्या सर? Yes, this is condition. ये जो है ना ये. हाँ. ये शर्त है. ओके. कंडीशंस कभी भी आप खुला नहीं रख सकते. ठीक. ठीक है? ओके ओके. अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों से. ध्यान से सुनना. जो भी फेल हो गए, means those who are less than 35,
I want to be them red in color. Okay. Those who are more than or yeah, more than 35. No, not more than 35. Anyone who is actually more than 100. मतलब गलती से अगर 100 दे दिया तो 100 के ऊपर वो लोग विजिबल ही नहीं होने चाहिए. ठीक है. It means white. और 35 और 100 के बीच वाले जो रहेंगे वो लोग ब्लैक में या ग्रीन कर दो आप. मस्त. चलो ग्रीन कर देते हैं. पास हो गए ना सब लोग. चलो ग्रीन हो गए. Solve this and I want everyone to send me on my personal. यहाँ पे जो मैं आपको हेलो करूंगा आप लोग मुझे DM करोगे यार. So I want you all to write and show, send it to me so that I can see कि किसने क्या समझा है. आपको सॉल्व करना है पहले सॉल्व कर लो या फिर आपको बुक में लिखना है तो लिख लो and then you write it and show it. चलो I'll start. मैं लिख दूं आंसर. So what I want is I will type here make the font color red. Color comes first. Open the bracket. Less than 35. Close the bracket. Then comes make it green. Whoever is more than 100. And the third one is अच्छा, more than 100 green नहीं करना. More than 100 white, sir. White. White to white the moon. Okay, I just say white, which is more than 100. And then I want green, right? I'll just write green and I'll leave it like that. You cannot write 35-100 ऐसा सब नहीं लिख सकते हो because less than 35 has been mentioned, more than 100 has been mentioned. Now what is remaining? The remaining is 35 to 100, right? क्या बोलते हो? तो बस मैंने इसको बोला कि बाकी जो बच गए हैं उनको ग्रीन कर दो. Let's see whether this is working or not. एक बार देखना पड़ेगा. So I'll select all. I press Control C. I come here. I select these numbers. I press Control 1, and here I will paste it. Let's see what happens. We don't have anyone who is more than 100. Na, iske liye aisa hai. Okay, now suppose if I change this, I just say it equals to random between, let's say from 2 to 120. Now you see this is gone. So see the colors, automation colors over there. You can see those who are blank, they are out of 100. देख सकते हो it's 104. फेल हुआ इतना जन है, ये लोग सब पास हो गए. इतना सबको समझ में आया? I hope you all understood. Darshan, did you get this formula? Because Darshan is the student who is very fresh to Excel. अगर दर्शन को समझ में गया तो मेरे को टेंशन खत्म मेरा. Yes, sir. Darshan, you understood this formula? Yes, sir. Correct? Yeah. First comes color code, then comes condition, then full stop. Then again comes color code, then comes condition. Then color code, but then condition का जरूरत नहीं because we are already, the remaining part is green. ठीक है? Yes, sir. Now let's change some. इसके अंदर twist लाते थोड़ा कि those who have failed, I don't want to see the marks, right? वो marks मत दिखा. Marks के जगह पे I want to see something else, right? तो जो भी fail हो गए हैं तो I want to show them as a, चलो fail दिखा देते, FAIL.
तो how will I change the titles now? Now I'm teaching you how to change the titles. ठीक है, मतलब अभी देखो यहाँ पे देखो क्या, I will remove all of them. I said red color, fine. Then comes condition less than 35. Okay, now don't put a semicolon. मतलब if you put a semicolon means you finish talking. तो तूने बोल दिया कि okay लोगों के साथ में यही करने का है. But still you have something to say that make all the values which are less than 35 to red in color, but don't show the values. Instead of that, put a user string that should be in double quotes. That is fail. अगर आप ऐसे लिखते हो, ये जो fail, pass, work hard, okay, very good, whatever comment you want to just type, that should always be in double quotes. उसको आप box bracket में मत डालिए. Box bracket के अंदर only color codes and conditions आता है बस. So if you write this much, it will assume कि 35 वालों को fail दिखाने का. Now he will never show you the numbers. Instead of numbers, it will show you this title. बस इतना याद रखो. Okay, so I'll do one thing. I'll just select this much area. इतना ही select करता हूँ. And बाकी किसके लिए तो कुछ लिखा नहीं मैंने. And now देखो बाकी general हो गया है. ना ऐसे okay. Now see. No color codes for anything because we haven't said anything. सिर्फ fail को वो fail दिखा रहा है. And those who are above, so अभी मैं आपको बताऊं कि those who are above 100 उधर invalid आना चाहिए. तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, less than 35 fail, then put a semicolon and then you say anything which is more than 100 please show this as it's an invalid number, invalid marks. ठीक है, बाकी सबको वो यूजुअली वैसे ही दिखाएगा जैसे उसको दिखा, it will show it in black color. See? अच्छा, बाकी सब लोगों को ब्लैक नहीं दिखा रहा है, तो रिमेनिंग मुझे बोलना पड़ेगा. The remaining is black. Got that? कितना समझा? Okay, now let's say that whenever you type any number over here, you have an habit of writing the numbers like this. आप लोग हमेशा नंबर ऐसे लिखते हो. People write in this way, right? This is very wrong. आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो. Now this is called suffix and prefix. आपके नंबर के बाद में ये लाइन, आपको ऐसे लाइन चाहिए. You cannot write this manually. अगर आप ऐसे लिखते हो ना, तो ये फिर नंबर नहीं रहेगा, ये फिर टेक्स्ट बन जाएगा. तो क्या करूं? मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं नंबर टाइप करूं, वो अपने आप इसके साथ में लगना चाहिए. जैसे हम लोगों का ये कैसे लगता है? See? Control Shift and okay. So now you type any number, you get this currency symbol. Control Shift and dollar key, direct shortcut key for changing the format to currency. Control Shift and dollar key. Control Shift and hash key आपका डायरेक्टली डेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे. Now देखते हैं, अभी मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूं. सबको सिलेक्ट करने के बाद आई गो टू कंट्रोल 1, कस्टम में जाता हूं और पता है यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं? 0. नो, आई विल टाइप what I want. What you want? You want apple, mango, or what do you want? I say I just want this thing. आपको यही चाहिए था ना? You wanted a slash and a hyphen. आपको यही तो चाहिए था. अगर मैं इसकी जगह पे मैंगो लिख दूं, तो मैंगो ठीक है. और मैं जैसे ओके करूंगा, इट मींस आपने बोला है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर आने दो चाहे, मैंगो दिखाने का. यू टाइप 5 तो बोलते मैंगो, ऐसे 10 तो बोलता मैंगो, 50 तो बोलता मैंगो,
You can just see here, but वो मैंगो नहीं है, वो 50 लिखा हुआ है, but the outcome is mango because आपने forcefully उसको मैंगो लिख के दिया है यहाँ से, ठीक है ना? Okay, so if I type like this, I say okay, you will see, तो उसने मैंगो की जगह पे ये कर दिया, but he is not showing me my numbers over here, है ना दर्शन? नंबर्स नहीं दिखा रहा, तो आप जो बोलेगे वो दिखाएगा. So I want to see my user input also. So you'll have to put a container over here. मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो भी है वो तो दिखना चाहिए, लेकिन इसके पहले I want a container, and container is nothing but a hash symbol. याद रखना. What is hash? Hash is a variable. It acts like a container. It acts like एक डब्बा. ये देखो ये हो गया. ऐसे समझ लो कि मैंने ये hash डाला है. तो मैंने बाजू में जो भी लिखा है वो तो आएगा ही, और बाजू में ऐसे डब्बा रख दिया है. तो डब्बा का मतलब होता है कि the user will type any number, it will be stored in this variable, and this variable will be seen over here. तो अब कैसे होता है देखो. I will select all of them and I press Ctrl+1 और मैं इसको बोलता हूं कि ये दिखाने का है तुझे, लेकिन इसके पहले before this show me put the डब्बा over. So if you put the variable before your user string, so it will store your number in this variable and it will show you. And now if I press OK, अब क्या होगा, अब आज के बाद जब तुम 10 टाइप करेगा तो ये आपको 10 के बाजू में वो डाल के दे देगा. समझ में आ रहा है? हैश represents the user input. जो भी यूजर ने नंबर डाला है, नंबर है only values. Hash will represent only the values. Okay. So suppose अभी मैं आपको बताऊं कि I want any number if I type, any number if I type, I should ऐसा दिखना चाहिए वो. Suppose if I type 5, अगर मैं 5 लिखूं तो I want it should show me like this, rupees 5 only, or let's say rupees 5 only. चलो, write for me and send me on the chat box. I'm so happy that आप लोग you are taking the initiative to write and send me up. That's nice. So everyone is very much correct. So हम लोग को क्या करना है? I just want this rupees. So rupees is user. ये तो RS जो है वो तो user word है. So I will type this RS like this, and I will close this. And RS के बाजू में you wanted the number which user will type, that comes from hash. दर्शन, hash का मतलब होता है नंबर आ जाएगा. And if you want some space in between, then after this full stop, I will put one space, and then the number, and then again I want only, so only again I will put a double quotes and I will put a space so that I get ऐसा. ठीक है? Okay. So if the numbers are already before, ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर भी, and I will select this my code. I'll copy this. I will select these numbers, press Ctrl+1, go to custom, and here I will paste my formula, and I say okay. Okay. So your numbers has been changed this way. See, देखो custom formatting का फायदा है. Indirectly, custom formatting, number formatting means you want to display your values. How? So now your fails should we work hard? No, fail जो रहेगा वो fail के बाजू में dash करके I want the number, उसका failing marks दिखाना है. And those who are more than 90, मतलब जो लोग मेरिट में आ गए, उन लोगों को मुझे मेरिट दिखाना है, MERIT. ठीक है? Right? So more than 90 should show me merit. तो रेड के साथ I want fail and the marks like this. बस इतना ही रखना है.
ये सब नहीं चाहिए। सर रेड के साथ क्या करना है? ये फेल दिखना चाहिए और मार्क्स भी दिखना चाहिए उसको। फेल क्यों हो गया? ये इतना फेल है, उसको मार्क्स मिला है। एंड मोर देन 90 है तो आई जस्ट वांट टू सी द मेरिट। एंड इसके पहले आएगा जैसे 92 ऐसे, और बाकी सब लोगों को तो ऑर्डिनरी मार्क्स है, जो भी है वो ब्लैक कलर। चलो फाइनल लिख दो खुद के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? इज वर्किंग राइट? So anything you want to write in merit, you always give like this, more than 90, and then you type this merit. It will change this to more than 90 merit. Okay, red color, I want them to be less than 35, and even I want this to show me as fail. So I just say fail, and then dash also will come inside, and a hash symbol. And here I want a hash symbol first, and then I want merit. And बाकी सबको make it black. This is what the code should be, if I'm not wrong. देखते हैं कॉपी करके। C here there's control 1, select control V, something somewhere wrong. सेमीकोलन नहीं इधर तो सेमीकोलन नहीं है क्या? हाँ सेमीकोलन नहीं है। रेड फेल हो गया, then here I should have a semicolon. Then 90, here also I should have a semicolon. Okay, so you can do like this. Now see, here I have some sales figure where you have huge numbers in millions, or it can be in trillions. Sorry, billion or a million. Sorry, है ना? या तो बिलियन होगा, 10 लाख मतलब 1 बिलियन हो गया, 1 मिलियन हो गया, 10 लाख में 1 मिलियन, राइट? तो या तो मिलियन होगा या तो बिलियन होगा। तो अभी ये क्या है? दिस इज, मैंने ऐसे ही डाल दिया है, दिस इज 63 लाख। 63 लाख मतलब इट्स ऑलमोस्ट 6.3 मिलियन, करेक्ट? आया ना? यस यस। हाँ, ऐसा कुछ तो मुंह हिला तुम लोग, वीडियो वाले कम से कम ऐसे करो तो मेरे को समझेगा। तो आई जस्ट डोंट वांट टू सी दिस 633, हो सकता है ये बिलियन में रहेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट ऑल दिस थिंग्स, एंड इफ यू पुट हियर कस्टम में जाके, इफ आई टाइप ओनली हैश, यू कैन सी दिस, जैसे हैश किया उसने पूरा बता दिया 63,60,158, राइट? एंड इफ आई पुट 1 कॉमा नाउ, लास्ट का 3 डिजिट्स पूरा देगा। ओके, सो वो अभी मिलियंस में जा रहा है, बिलियंस में। अब मैं इसको ऐसा करूंगा ना, अगेन 3 डिजिट्स पूरा देगा। तो यू नो दैट द थिंग्स आर राइट नाउ किसके अंडर में है वो? दिस इज 6 मिलियन, राइट? सर इट इज 6 मिलियन नहीं, 6.3 चाहिए था। ओके, देन डू वन थिंग, हैश डॉट 00 कर दो, तो राउंड ऑफ कर देगा वो। इट विल कीप ऑन राउंडिंग ऑफ योर कॉमास। सो आई जस्ट वांट टू शो दिस, और उसके बाद में give a space and just say it's million. I hope million is spelling right. Okay, so instead of showing the huge numbers, you can convert using commas also. 1 comma will delete 3 digits.
It will keep on rounding off your values. ऐसा भी कर सकते हो. Okay, now let's see how do I give some symbols. I can use symbols also. Say for example, अगर मेरे पास में previous years का एक sales record है, previous years, and let's say I have current year, right? And this is the difference. So let me take some numbers, small numbers लेता हूँ मैं. Take some small numbers. So from 10 to 100. Suppose this is my figure. ठीक है. Now I want कि जो negatives में है, means loss में है. ये मेरा loss इस साल में मैं downfall में हूँ. So I don't want to see this negative numbers and the positive numbers. Instead of that, मेरे को कोई ऐसा symbol मिल जाए ना, a graphical representation of my positive and negative numbers. By you can use a thumbs up, or you can use thumbs down, or a smiling face, या फिर a sad face, or anything. So I don't want these anything. So I can always convert these values to some symbols also. देखो तुम लोग simple सी बात है. Whenever you type in that box, ऐसा, इसका मतलब क्या होगा बताओ? It means अभी देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, and I press Control 1, and if you just say sad over here, तो सब sad हो जाएंगे ना? All my numbers will be sad. Yes. Correct? I want only negative numbers to be sad. Okay? Then I will say, I go to custom, and in double quotes, I just type happy. Okay? And semicolon में I will type sad. Now you are automatically Excel will understand the first semicolon के पहले it's always the positive numbers, and sad मतलब it comes into the negative वाला. So you will see that sad आ गया. Why it is sad and why it is happy, अगर वैसा भी चाहते हो, तो again you just say happy, and outside you put a hash symbol, and यहाँ पे you put hash symbol, and you say okay, and you will get the numbers along with happy and sad. So why I'm showing you this, instead of sad or happy, you put in double quotes a symbol, तो भी चलेगा. Symbol. Sir, how to get the symbol? You can get the symbol from insert. Insert में जाओ, या फिर Windows का shortcut की भी दिखाता हूँ. Go to insert and say symbols here. दिख रहा है आपको? So in Arial, I always use this. Arial के अंदर है ना geometric shape ले लेने का. So you get these shapes. I always use this font. ये मेरा हमेशा रहता है कि up and down के लिए. Geometrical shapes, हाँ. So I took one this upper side and I say insert. I have to insert in one particular cell, and I will take one more here and I say insert. ठीक है? आगे समझ? What is the shortcut for symbol? It's a Windows key and a semicolon. ये this will work in everything. You can take it in PowerPoint also. किधर भी यूज कर सकते हो आप. ये देखो मैं जैसे Windows key and semicolon दबाऊंगा, you will see. अच्छा आपको दिख रहा है ये मेरा विंडो? Can you see this? No, because I have only shared you Excel screen. So wait a minute. I will share you my screen. Now you can see my entire screen, right? Now if I press Windows and semicolon, can you see this? Yes. Yes. तो जैसे मैंने Windows के साथ में डाला तो मुझे ये आ गया. So I can use this one. So I say, where you want to insert this? I want to insert it over here. So I press Windows and a semicolon, and I say, give me a thumbs up and give me a thumbs down, please. And I will close this one. So you see that I got this too. ठीक है ना? Okay. Now either say I will remove all my earlier formatting by pressing Control Shift and Tilt key. So everything is gone. These are all my numbers back as it is. अब मुझे ये numbers नहीं चाहिए. Those who are in profit, I want to show this thumbs up, or I just want to show this pyramid, okay, which is going up. So what I do, I will select this one. यहाँ से भी कर सकता हूँ, and I press Control C, so that it gets copied, ठीक है? And then I will select all my numbers. I press Control 1, and this time I go to Custom, and I press Control V over here, so that both my symbols comes inside. ठीक है? आ गया? Now पहला तो पॉजिटिव के लिए होता है, तो मेरा पहला पॉजिटिव के लिए हो गया. तो I just put a double quotes ऐसे
For the positive, I put a semicolon, and again in quotes for the negative, I am using this symbol. ठीक है इतना? And I say okay. You can see. But now let's see. Let us give colors, right? Green and red. Okay. Go to this. Before this pyramid, type positive के लिए green, and in box bracket I told you always the color code should be in box bracket red, and I said okay. You also want to see the values, तो भी ठीक है, तो भी अपन कर सकते हैं ना. So before green or after green, let's say I want before this symbol, I want my value to be seen. So I put a hash symbol, and here also I put a hash symbol. तो ये after हो जाएगा, तो before चाहिए. अभी एकदम it will be very close, हाँ, ऐसे हो जाएगा. Any questions? So I write it over here. What I did, it was very simple. यही था वो. So I wrote here green color करने का है तो positive ones, and instead of this green color में show this, and also show me the values. And for the negative numbers, right, I want red in color and a hash symbol and this one. So this is my code. Green for the positives, red for the negatives. Hash symbol will show me the whatever the number is, and next to that number show me this symbol, and next to this number show me this symbol. I hope it's very much clear now, Darshan. Sir. Sure, na? But should we give the colon in between these two? Sorry? The semicolon in between, sir, red and green. Actually, your voice Like is if oh. hello. Yeah, semicolon. Semicolon. Right, Darshan. Correct. So here I have to put a semicolon. Correct. And sir, I have another doubt. If we can assign like if the numbers are if it's not given like -66 and I'm trying to hear you because your voice is very low. Is this only for me or सबको आ रहा है slow? Sir, he is saying कि minus के लिए मतलब जो negative है उसमें minus sign दे सकते. Minus दिखना चाहिए, right? No, sir. Sir, no, my doubt is, sir, if it's not given -66 or something else, Okay. so we can assign the value stating it's lesser than. We can continue this. Yes. You can always assign using this. Yeah. Is it less than? You can assign from it. This is your own condition. If Yeah. you put the condition, then that formula it will take it as per your condition. Then Excel will not follow this positive negative numbers. Okay, sir. Okay. Now let's see this also. The negative numbers I want to show. Okay. So negative numbers will be shown like this. Okay, now you can also have some color codes also. Say for example, this green color is always something very gaudy. It's alag color hai thoda, it's a parrot green color. I wanted little bottle green color, which is not available in the color codes. So Microsoft ne aapko already, he has given you a lot of libraries. You can use this syntax called color, and then you start giving, I think 255 colors there. So if I say color 10, this is what I always use. Color 10 will give me dark green color. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Instead of this green, if I type like this, color 10, so it will go into the library and it will select this color 10 ka code. Okay. नुसरत लगता है खाना खा के आई है. ठीक है. So अभी now what I will do is I will select this all. I press Control 1, and this time I will go instead of green. मैं इसको बोलता हूँ मुझे ये वाला ग्रीन नहीं पसंद है, मुझे पसंद है कलर 10 वाला. Let's see what happens. The difference will be this green will be converted to bottle green.
यू कैन चेंज कलर 10, 11, 12, देखो अपने हिसाब से तुमको क्या पसंद आ रहा है, अलग अलग कलर है, मार्केट में से जाते हो भैया और कोई कलर है क्या आपके पास, तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर एक्सेल। Sir, how we can check for the colors? मतलब कौन कौन सा है? गो टू माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी, आई जस्ट हैव अ लिंक बट मैं पास ऑन कर दूंगा, बट माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन साइट पे ही है एक्सेल का कलर कोड्स, इनबिल्ट नहीं है इसके अंदर कुछ? इसके अंदर नहीं है, वो आपको उधर मिलेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, Okay. दिस कलर कोड्स का कॉम्बिनेशन यू गेट ऑन द साइट। ओके, नाउ वन मोर थिंग, लेट्स से कि you want the numbers and the symbols, ध्यान से देखना, if I change this to accounting format, what happens? देखो accounting format क्या करता है मालूम है ना आपको? Okay, accounting format में I go and I just say I just want this rupees format. So you see the difference is दिख रहा है आपको? The rupees are on the symbols are always on the left hand side and the values जो है वो right में, दिख रहा है, लेफ्ट में और ये राइट में, बराबर है। I wanted the same thing over here, means मैं ये चाहता था कि ये जो मेरे सिंबल्स हैं, ये मेरे जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट में रहें और ये मेरे सिंबल्स राइट में रहें। For that you can always use a repeat alphabet. So in this the repeat alphabet is an asterisk. थोड़ा सा आई नो थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें तुमको नहीं मालूम होगा। एवरीवन जिसने एक्सेल में काम भी कर रहे हैं ना, आई थिंक दे मस्ट आल्सो नॉट बी नोइंग दिस, व्हाट इज asterisk यूज्ड इन दिस कोर्स। asterisk इज अ रिपीटर, मतलब ये होता है कि अगर मैंने कहीं पर भी इधर आई वांट टू सेपरेट, ये ऐसा समझ तो दिस इज माय वैल्यूज एंड दिस इज माय सिंबल, आई जस्ट वांट टू सेपरेट दिस टू, मींस हाउ टू सेपरेट, वैल्यू शुड बी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल एंड सिंबल शुड बी राइट हैंड साइड ऑफ द सेल, बराबर है। सो इन बिटवीन व्हाट यू वांट, in between I want a space or I want a line. So what I will do after this space, this hash symbol, I will type an asterisk symbol. Asterisk का मतलब होता है कि अब मैं जो भी कुछ डालूंगा ना वो रिपीट करेगा till that shape. Means if I type here asterisk space, this space will be throughoutly repeated जितना तुम्हारा बड़ा कॉलम रहेगा। Let's check. I will just copy this out. And now I will paste it over here. You can just see we have an asterisk symbol here, and after that I have put a space and I say okay. Now you can see this. Only मैंने किसके लिए डाला था वो? Only for the positive numbers के लिए डाला था. Now you can see that positive numbers का values is showing me the left hand side, and the symbols are right line. है ना? So ये because of this one. ये देखो ये actually दिखने वाला नहीं है. It's not visible to you all. This is just a separator. Values और symbols के बीच में तुमको एक space चाहिए. But if you type this now, see what will happen. I say asterisk and a hyphen. मतलब repeat the hyphen till you find the symbol. So if I copy this now, यहाँ पे भी करता हूँ asterisk, and I think for the negative वालों को ना I will put a ऐसा वाला symbol. So जो भी loss वाले हैं उन लोगों को numbers के बाद में I want this wavy line to come, है ना? चलो select करते हैं, I press Ctrl C, I'll select all of them, I press Ctrl 1, and let us copy this. I say okay. See now. ठीक है? Any questions you all have, please बोल सकते हो आप। I know it's a little difficult to remember all these things, but ठीक है, anytime if you find that you want to use this, you can always use this repeater. नहीं तो ये ठीक है। Even colors are not reused because you can always use the default color red, blue, green, black. It's always there for you all. तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, अगर चाहिए तो ले लो।
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे अभी? I will take a sad symbol. It's crying. Okay, go for this cry. Okay, and I'll also go for happy. Something like this. So select and copy this. Select all. Press Control 1. Those who have failed. I don't want to see the marks. I don't want to see the failure. Instead of that, I want this. Okay, जो मेरिट वाले हैं, instead of merit, I want सर now. एक चीज रिपीट कर सकते हैं थोड़ा, वो 6 मिलियन वाला जो आपने बताया था? हाँ हाँ, क्या था वो? अभी सपोज मेरे पास कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, रैंडम बिटवीन, लेट मी गो विथ, मिलियन कहाँ से चालू होता है? 10 लाख से, राइट? यस। ओके, आई स्टार्ट विथ 10 lakhs, 10 लाख से लेकर आई विल गो विथ 125 2 3 4 5 lakhs. ओके, अभी देखो ऐसे दिखा रहा है, बिकॉज यू कैन नॉट शो मी दिस. So I have to put it in general format. तो ये अभी मुझे इसने दिखा दिया. मैंने क्या लिखा था? Random between. Okay, I wrote some random function, and let me select this much. So these are all my millions ka numbers. So what I will do now, if you select this all, and you just say in custom key, see if I type 0 also bhi chalega and hash bhi chalega. I type hash. The moment I type hash, वो exactly full दिखा रहा है. That is, it's 11 lakhs 50,000 नहीं 115 lakhs, right? 4,090. So what I will do, I put a comma now. देखो जैसे मैं comma डालता हूँ, you can just see लास्ट जो 090 है ना, वो निकल जाता है, and it will round off the remaining part. That is 11504 बच गया. Now what is this 11504? अगर ये मिलियन में लिखता मैं तो कुछ हो जाता. This could have been 11 million या 115 million हो जाता अगर ऐसे करता तो 0.00 के साथ, right? But now we have written only in, sorry, billion हो जाता अगर मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ millions में लिखा है. तो I will type one more comma. So now this becomes rounded to 12 millions because it is 11 lakhs 50 के ऊपर चला गया तो उसने इसको राउंड कर दिया. ओके, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा? 0.00. So now this becomes 11.50. राउंड मत करो. I want to see my, तो 11.50 lakhs हो गया. ठीक है? Okay, उसके बाद I will come here. Millions हो गया, sorry. So I will type here 11.50 million and in double quotes I will type this as M. ठीक है? सो बेसिकली कॉमा जो वो लास्ट 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देता है. Yes, round off कर देगा. It's Okay. only used for huge numbers. It's only used for millions. तो ये आपको इसका ये होगा. नहीं तो it will not, because it will by default it will remove the 3 numbers. So if you are using this for thousands and 10,000, it will not help you out. Okay. Okay, now let's say I have some names over here. Question to you all. I want to add
email ID. See, it's darshan at say henryhaven.com या gmail.com. It's nozat at gmail. सब gmail वाले हो आप लोग. तो मुझे इसके अंदर सबके अंदर वो ऐड करना है. चलो लिख के दिखाओ. No one. अरे बाप रे, why you are taking so much of time? You know why? Because you all are trying it. Oh my God, Rajat is doing something different. Rajat, no. We are not doing anything like all these functions now. But it's okay. Okay, But well tried. This shows that you are using so many things in Excel. I try to, but then again, depends on the. Yeah. I try. So what happens, अभी मुझे पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो. आप लोग पता है क्या कर रहे हो. मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हो. आप लोग सबको सिलेक्ट करते हो, and then you try giving something like this. कि you just select all these things, and I press Control 1, and then I come here and you say that I want a hash symbol, और इसके बाजू में अपने को चाहिए @gmail.com. So you want hash तो उसके लिए आएगा ना, values के लिए. Yeah, so this will not work because hash एक ऐसा कंटेनर है which will only store values. लिक्विड स्टोर करने के लिए अलग जार आते हैं, सॉलिड मटेरियल के लिए अलग आते हैं. The same way you will have to put a different container for text. You cannot put hash. And to store text, we have a container called @symbol. Try with this. Just give me a thumbs up if it works. जिसका काम करेगा एक ऐसे thumbs up का मुझे सिंबल भेज दे. चलो ठीक है. तब क्या करेंगे? How will I type this? I will type this way. I just say select all of them. Sorry. Press Control 1 and I go to custom, and here I will type. Show me the names. जो भी नाम है वो. तो I just say @ का मतलब होता है actually show me. जो भी नाम पड़ा है वो नाम रहेगा ही रहेगा. और उसके बाजू में I want to type @gmail.com. Okay, understood now? So you can use this @ symbol only for text. Now my question to you all, a very simple question है, many times used. Suppose you have a list of names over here. ठीक है? I know many of you must have used this, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा. अब ये जो नाम है, मुझे ये नाम और सरनेम अलग चाहिए. Okay? Simple है. Many people must be using this. I want to divide this two over here. Surname should come over here and name should come. There are many methods to do this. बहुत तरीके हैं इसको करने के. So suppose if I can use some functions, I can just something like that. I can just use so I get the names. Then I can get the surnames. But don't type anything, please. I don't want anyone to type this. Something like this. I will type this. But forget this. I don't want to show you because many people are right now typing this functions. So I don't want you to use right now this. This is not a simple method. ये method से भी मैं आपको बताऊंगा
I don't want you all to apply झंडू balm on your head right now. बाद में करेंगे, बाम बाद में लगाएंगे. बाम लगाने का टाइम आएगा, याद रखना दोस्तों. उस दिन 2 बॉटल बाम लगाना पड़ेगा. Okay, Manasa, you are understanding my Hindi? Yes, sir. My Hindi is little poor, but I'm trying to speak. Yes, sir. I'm understanding, sir. Very nice. आप लोग सब लोग हिंदी समझते हो ना? Yes, sir. Nice. तो अब देखते हैं, अभी इसको दूसरा तरीका क्या है? The second method is what I will do. I will select all. ठीक है? After selecting all, this is the commonly used thing. Then go to data. ठीक है? Because मुझे इसको काटना है. I want to cutting this. I want to divide this. So I want to break Text this. to column. हाँ जी. I just want to break this into 2 parts. तो जैसे मैं डेटा में जाता हूँ, I have an option called क्या है? Text to column. Text to columns. जैसे ही मैं text to column में जाता हूँ, so you can see this. Just try to understand the steps. दर्शन देखो आप, वो आपको पूछता है. See what is going to do, you know? He will be dividing this text into 2 different columns. You have 3 different columns. उसको नहीं मालूम. वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है. बोलते देखो ये जो तुमने सिलेक्ट किया ये वो टेक्स्ट है. Now where you want me to separate this? किसको अलग कॉलम में किसको डालने का? How we will know कि the different column starts from which position? So I know that the different column should start from space because हर एक word में space तो आता है. And space एक ऐसा character है जो बताता है, which is showing that this is the position where my name gets end and my surname starts. Correct? So इसको मैं बोलता हूँ कि I am using not the fixed width but I am using a delimiter. तो मुझे बोलता ठीक है. I say next. He's asking me, tell me which is the keyboard का character, a delimiter, जहाँ से मैं column divide करूँ. Is it a tab, a semicolon, a comma, a space, or what? I say yes, it's a space. I say it's a space. जैसे मैंने space डाला, you can see this down. You can see how everyone is getting divided, and I can just say finish. जैसे ही finish करता हूँ, you will see that it's got divided. ठीक है? But I never use this. मैं कभी ये यूज करता ही नहीं. अब प्रकाश जी बोलेंगे सर आप क्या यूज करते हो? मैं वो वाला भी यूज नहीं करता. मैं पता है क्या यूज करता हूँ. देखना चाहोगे? ये है ना. मुझे क्या, मैं क्या करता हूँ पता है? I will type it. On click function. क्या लिखा मैंने? दर्शन. अब एक्सेल को बोलूंगा एक्सेल, मैंने दर्शन लिखा ना, बाकी तू समझदा. इसको कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ एक्सेल. मैंने सिर्फ उसको पहला वर्ड लिख दिया और अब मैं इसको बोलता हूँ एक्सेल, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टाइप 1 2 and 3. कैसा लगा मानसा? कैसे किया सर? मेरे दिस को इज पता नहीं. कॉल्ड आशिक. Flash ये fill. फ्लैश फिल है क्या सर? ताली भी नहीं Flash बजाते. fill. Sir, Control ये E. फ्लैश फिल, प्रकाश कुमार जी. ये Yes. फ्लैश फिल फंक्शन है क्या? फ्लैश फिल. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. Control E. Yes. So control E से आप फ्लैश फिल कर सकते हो. फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली इट विल डिटेक्ट द लेफ्ट मोस्ट में जो भी होगा वो. ओके, वापस से दिखाता हूँ मैं आपको दर्शन. सो इफ आई टाइप हियर, सपोज माय सरनेम है. ओके, या तो नेम्स हो गया तो जस्ट आई नेम हो गया. एंड दिस इज माय सरनेम ओवर हियर. एंड नाउ इफ आई टाइप हियर प्रसाद एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल ई नाउ, Excel will understand. लेकिन फ्लैश फिल के लिए you should be very careful that below there shouldn't be any text. It should be very empty. और नीचे आना है. You cannot write Prasad here. You cannot use flash fill from here. You have to come down one step and press Control E. वो समझ जाते हैं अपने आप. Now there are many things you can do. I just wanted to write the email ID. ठीक है? और I just want to write only the initials. देखो कितना अच्छा है. I just want to write only the initials. मतलब I will just write DP. That is called Darshan Prasad. I press enter and let's find out. अब ये कर पाता है कि नहीं? Press Control E. कर देगा सर. देखो कितना ब्यूटीफुली है ना.
तो आई कैन जस्ट राइट समथिंग लाइक दैट, और मैं वैसा भी कर सकता हूँ कि ऐसे dp@gmail.com। देखते हैं ये करता है कि नहीं, टेस्ट करते हैं। कंट्रोल ई। अब इसने नहीं किया, ठीक है, हो सकता है नहीं किया, कोई बात, उसको नहीं समझ में आ गया होगा कि क्या करना है करके। आई डू वन। अभी नेक्स्ट वाले को भी मैं देता हूं ऐसे nr@gmail.com। अब देखते हैं फिर से, आप वो कर लिया। So what happens, when the first time he doesn't understand, give one more chance to him ना, आखिर में वो भी तो दिमाग लड़ा रहा है। So automatically वो समझ जाते हैं कि अच्छा now he is asking me to go for this, so let him tackle, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। अगर नहीं होगा, give him one more chance and try to do that one more time again. Is that okay? You can write lot of combinations. अगर suppose कहीं पर कुछ capital letter में नहीं है, so if I write something like this, कि ऐसा लिखता हूँ, दर्शन, only दर्शन। अब देखो क्या हो रहा है, is not getting that because here it's empty, तो वो लेफ्ट में जाता है, राइट। बट लेट मी टाइप इट ओवर हियर एंड आई प्रेस कंट्रोल की। सी, आई रोट ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, उसने बाकी सबको भी वैसे ही कर दिया। सो केसेस हैव बीन यूज्ड हियर। इनिशियल्स ले सकते हो आप, यू कैन राइट आफ्टर दैट, आई कैन राइट लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन यूज दिस। और इफ यू डोंट रिमेंबर, कभी ऐसा हो जाता है कि तुमको याद नहीं रहेगा सर वो कौन सा शॉर्टकट की था, यू जस्ट राइट दर्शन, ओके, एंड कम हियर एंड ड्रैग इट, ठीक है, लीव इट। दर्शन आ गया, come here and say, don't just copy the cells, go with flash fills. Then also you can do this without using any keyboard shortcut keys. So, if already separated, then I can bring it back. अगर पहले से ऐसा है and you want it to one cell, so I can use this once. But you cannot use, what is the drawback and what is the limitation of this? I cannot do anywhere over here. ये मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। I have to do it here only. Then only Excel will understand what you are trying to say. ठीक है, here if I write darshan, he will never understand that you are asking him to, when I come down, then यहाँ पे नुजरत आ जाए, he will not understand this. Okay, I think fine for the day today we finished, because I don't want to start any new topic today. मुझे कुछ नया नहीं चालू करना है, मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग पूरा खत्म कर दिया, और भी ज्यादा नहीं घुसने का इसके अंदर, इतना बस हो गया अपने को, इतना भी आ गया, it's more than enough. So the day after tomorrow I am going to show you all, especially to Darshan. चला गया दर्शन क्या? ओके, कोई बात, इसको बोल देना, सर ने बोल दिया ऐसा। अच्छा दर्शन है sorry. So those who have found this custom formatting little complex, सर समझ में नहीं आ रहा है किधर हैश डालना है, where to put the bracket and I don't understand, then उन लोगों के लिए मैं परसों एक नया जादू दिखाने वाला, ठीक है। सर ये मुझे सर बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं, आपको समझ में आ गया कस्टम फॉर्मेटिंग? नहीं आया सर। तो टेंशन मत लो, इसके जगह पे अपने पास में दूसरा लड्डू है, तो मैं आपको परसों दूसरा लड्डू खिलाऊंगा, ये सारे काम ये करेगा विदाउट एनी बाम का जरूरत नहीं लगेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। आफ्टर टुमारो ऑल ऑफ यू, ठीक है, परसों मिलते हैं, मंडे विल मीट अप। यस सर। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस फूड, सब लोग खाना खा लो, हंग्री होंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय। गुड नाइट, हैव हैप्पी वीकेंड। या हैप्पी वीकेंड टू ऑल, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल, एंड हैप्पी मकर संक्रांति। संक्रांत ऑल्सो, यस।